Yeah, hello, good evening. Hello friends, welcome to the session. और ये जो सेशन है, the strategy to complete the high scoring topics. You know, at the end of the preparation, it doesn't matter how many years you prepare, how strong you prepare, but the last minute is always the best moment for your preparation. And ऐसा भी हो सकता जो लोग syllabus को भी complete नहीं किया, but last 1 to 2 months, if you do well preparation, there is a possibility of the high scoring in the actual GATE exam. तो वो strategy क्या होना चाहिए? और हो सकता है आपके डाउट सिलेबस कंप्लीट किया बट आपको ये समझ नहीं आ रहा है लास्ट मंथ में क्या करूं. हो सकता है टेस्ट देना है बट टेस्ट देने से टाइम वेस्ट होता, बट आप नहीं सीख सकते. बट टेस्ट देने से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या मिस्टेक कर रहा हो. तो टेस्ट देना भी ये सही डायरेक्शन नहीं है, बट टेस्ट के अलावा और क्या करना चाहिए वो है हाई स्कोरिंग जो टॉपिक्स होता है और जो हाई वेटेज टॉपिक्स होता है उनको अच्छा से कवर करना, और जितने पॉसिबिलिटी है मतलब 1 बार 2 बार 3 बार जितने पॉसिबिलिटी है उतने बार आप रिवाइज करना. यू हैव टू रिवाइज एज मेनी टाइम्स पॉसिबल. ऐसे कभी नहीं होना चाहिए आई हैव डन इट. अगर आप सोचा है आई हैव डन इट, देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट यू माइट डू मिस्टेक्स इन गेट एग्जाम. देयर इज ए रीजन बिकॉज यू हैव टू बी इन टच till the exam. So you should not stop preparing, you should not stop practicing, you should not practice, you should not stop revising, you should not stop giving tests. So everything is important, but how do you align all the important topics in your preparation? Maybe for preparation, maybe for revision and practice, or you need to identify your mistakes in while giving the test also. तो ये है, हम जानेंगे अभी और क्या क्या हो सकता है हर सब्जेक्ट की, सिर्फ नेटवर्क्स नहीं, प्रोग्रामिंग नहीं, और क्या हो सकता है इस सब्जेक्ट में और इस वीडियो में हम जानने वाला है. चलो शुरू करते हैं. हम जितने भी डाउट्स होता आई विल टेक एट हैंड. देखो गेट जो जर्नी है तो डेफिनेटली एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर द कवरेज. बहुत लोग ऐसे हैं पूरा सिलेबस को कवर करते बट अच्छा से कवर नहीं करते. सो व्हेन यू आर कंप्लीटिंग द सिलेबस is always important where you need to focus more on revision and practice, right? ऐसे नहीं यार सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, सिलेबस कंप्लीट तो हो गया बट फिर भी हम अच्छा नहीं कर पाते. there is a reason because you are not giving the enough time for doing more revision and practice on the high weightage topics, right? The few subjects or few topics decide major chunk of the total marks, right? तो यहाँ पर ऐसे कोई टॉपिक्स है वो आपकी एग्जाम के लिए फॉर यूर प्रिपरेशन दे आर गोइंग टू डिसाइड द गुड मार्क्स. एंड राइट ऑर्डर ऑफ द प्रिपरेशन ऑल्सो समटाइम्स गिव्स यू द मोर एडवांटेज. सो लेस स्ट्रेस बेटर रैंक इज गुड, राइट? तो हमेशा ये हम सोचते हैं यार स्कोर ज्यादा कर ले यार बाय डूइंग लेस प्रिपरेशन और लेस मास्टरिंग. यस ट्रू, because you can't do thousands of topics mastering. Even you are good at one subject but you cannot good at all the subjects. Even the first ranker also does the same thing. Everybody has to be good at something but not all the things. So you have to focus on what is having high weightage, right? तो जान लेते यार. देखो जानेंगे इसके बारे में वन बाय वन. हाई वेटेज एरिया कहाँ है, राइट? तो देखो आप जो भी प्रिपेयर करना, जो कोर CS हो, DA हो, कोई भी EC इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कोर जो कॉन्सेप्ट्स होता है तो 60% आपको सिक्योर होना चाहिए. मतलब 85 मार्क्स है तो 85 में कम से कम 50 प्लस तो आना चाहिए लगभग. तो मैथ्स एंड एप्टीट्यूड 15% वेटेज तो है ऑलरेडी, तो दोनों मिलके 75 प्लस एंड एवरेज तो आना चाहिए. बट हम ये प्रॉब्लम है बहुत सारे क्वेश्चंस MSQ टाइप के है, बहुत सारे क्वेश्चंस NEATB टाइप के है और MCQ में नेगेटिव है. ये तीनों में तीनों लूप होल्स है कि MCQ में अगर गेस किया तो गलत होने के लिए चांस है, MSQ में सही आंसर नहीं किया तो 0 मार्क्स आता है. तो NEATB सिमिलर टू MSQ कि वहां भी अगर सही नंबर नहीं डाले तो वहां भी यू मे नॉट गेट फुल मार्क्स, राइट? तो बिकॉज ऑफ दैट आपको ये इंश्योर करना, यू हैव टू इंश्योर
at least you should always land while giving test or doing anything 50 to 75 बीच में हो तो there is high probability that you will get 75 plus in actual gate exam too. क्योंकि actual gate exam जो standard है काफी easy रहता और medium level रहता mostly. क्यों I have not seen last 5 to 7 years the hard paper, because during offline test when IITs were conducting the offline examination, during that paper was slightly medium to difficult, but when the online was started तो एग्जाम पेपर कभी ऐसे नहीं यार बहुत डिफिकल्ट है. तो 50 to 75 मार्क्स लाना बहुत इजी था, बट बाय एंश्योरिंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेज टॉपिक्स. ठीक, और स्मार्ट रिवीजन एंड मॉक्स which will always give you the advantage of the rank, right? Right. Yes, I'll request everyone, because when you give all India mock test, please never depend on the test series, never depend on the any institute, because you are attempting because you prepared. If you are not prepared, because it's I've seen that those who are studying there, they'll get marks because the same question they will repeat from their class, same question they will repeat from their earlier mocks. So those people without answering, even I saw that 5 seconds, even teacher cannot do even 3 minutes. The students does in 5 seconds, 10 seconds. How can it be possible that, for a student to do that without reading the question, you are able to give them attempt? So please, that how that is happening, because of, it, so don't do it. So if you are not confident giving any All India mock test from anywhere, please don't do that. If you're not getting the marks, please don't attempt the test as per my knowledge. When you are able to secure, after preparing 40 to 50 marks, 60 marks, 70 marks, then you are in right. Doesn't matter sometimes, which test series you give. But some of the test series in the world, in India, they are not for you, they are for somebody else. So please don't attempt, better. And always focus on high weightage topics first. When you do focus on high weightage topics, what happens? You will get good marks. In any test series that you attempt, you will get good marks. Right? After attempting test series also, you are not getting good marks, you can analyze well. What is the mistake? You have not studied or studied? If you are studied, what standard you have studied? Because as I see, right, if there are 5 to 10 test series are there in India, and better, 2 to 3 test series that are matches with the gate level, choose them and go with them better. Because if you are going with high or low, both will create a problem unnecessarily. Okay, we always suggest where to attempt, what to attempt. Already GFG is there, that we are already working on every question. We're making the video for you. Like some other, I don't know what are they, but they don't make the videos, they don't make the solution, then there is no use, right? Just having the answer, you don't get the confidence. So where you get a video solutions, where you get the suggestions, guidance, there you can focus on the test series. Okay. Now let's come to the point. What should be the priority order for your preparation? Okay. There are, good chances of getting good marks when you choose the group of the subjects, do revision practice with them, because there is a connection with them, and so that you will get a much confidence with them. Like example, CDS Algo. When you are doing the preparation and practice these 3 subjects together, and there is a connection between them, maybe logical oriented, right, coding oriented, and so that you'll get a much advantage over it. Like CDTOC discrete mathematics, if you do together, you will get mostly computation oriented, theoretical computation, design oriented. So you will get a lot of understanding over it. Like digital CO and operating systems. And again, you will get system related advantages, and you will get much understanding of the subjects. And DBMS and CN you can do separately, as they are something different from other subjects. DBMS is so easy to complete, CN is so vast. So better to choose which one to and when to prepare. But last minute, you avoid preparing computer networks, which will cost your time. And so better, do some of the important topics rather than whole subject to prepare. So I have seen some of the people, sir, yeah, I'm not able to complete the TOC because I have not started it. Some people say, sir, I have not started algorithms yet. What to do? And some people say, sir, CN I have not started, what to do? So rather than thinking about the whole subject in the last minute, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सेलेक्टेड वेटेज टॉपिक्स को प्रिपेयर करना चाहिए. तो वो वेटेज टॉपिक्स क्या है और इनकी वेटेज क्या होता है, और मैथ्स एंड एप्टीट्यूड को कैसे प्रिपेयर करना है, जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में है. तो
I'm going to give you the very good analysis for you and choose based on the weightage in the last minute. Because अगर आपके सामने यार 6 महीने है, ठीक है यार पूरा कंप्लीट करोगे, बट अभी 6 महीने नहीं है ना, तो आप कोशिश किया होगा because of semester exams, because of other things, you may not done well as per the prediction. But अब समय आया है, तो you have to wind up the whole preparation somehow. You should be ready for the exam because समय ज़्यादा नहीं है. When time is not enough, then you should choose the selectively and strategically so that you will get good marks. तो focus ये है, those who have completed definitely should focus on high-weightage. Those who have not completed, then how to complete the remaining portion. Should I complete whole syllabus because 1 or 2 subjects are there? Okay, complete everything. But if there are 3 or 4 subjects more, then choose the high-weightage topics to complete. So what are they? First, before that, तो इनकी weightage एक बार जान लेते, so that you will choose as per your preparation. Okay, CDS Algo, if you prepare well, see, getting 15 marks easy. So I always stick to the less marks so that you'll get 75 plus easily. Now 15 तो आना चाहिए आपको एग्जाम में बैठ के यार. 15 कभी कभी 14 13 भी चलेगा, but 15 is a good when you combine these three. Weightage can go up to 20, but you should secure 15 marks so that you will be there around 75. Plus or minus 2 marks is fine, but I'll just consider the minimum weightage so that you should guarantee landing nearby 75. Okay. Now CDTOC discrete mathematics, when you study, the 18 is so easy to get so that you will be landing nearby 75. And DL COOS, when you study these three, then 80 marks you should be aware, and that you should get at least 16 18 somewhere minimum, so that overall again you will reach 75. DBMS plus CN, when you mix up, 12 marks you should get at least when you combine both of them. So what are the topics you should study to ensure that you will be there at minimum? Again, I'm not sure we will get 75, but if you do well in your preparation, there is a guarantee of getting 75 marks. And maths and aptitude, when you prepare, minimum 12 तो आना चाहिए. Of course maximum could be 20 21 somewhere, but आपको 12 तो आना चाहिए ताकि आपकी जो ओवरऑल प्रिपरेशन की वेटेज है, कभी कभी हो सकता है आप बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 20/20 आया, तो बाकी यहाँ मान लो CDTO से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कम प्रिपेयर किया, यहाँ 15 भी जा सकता. बट बैलेंसिंग दैट इज चॉइस फॉर यू. बट एज पर माई नॉलेज, अगर 75 प्लस मार्क्स लाना है तो एंश्योर दैट you will get that minimum marks in each combination, right? Yeah. I'll take the doubts for everyone, but before that, let me complete all the important points for you. Let's go with every combination. First, let's go with the programming and data structures. Where do you focus basically? Pointers arrays, definitely, and strings recursion, and coffee important recursion topic here. And right, along with that, you can go for static variables and auto variables differences. Linked list, stacks, queues, very simple data structures that you can easily cover up. Trees definitely you should cover, because trees will connect with the discrete mathematics, algorithms, and data structures, and even computer networks. There are a lot of places this trees concept is there. Okay, and time complexity basics, anyhow it will cover in algorithms. Oh, so backbone for algo, OS, DBMS. A lot of advantages because of this, including CN. And target, you should do 8 marks from these 2 subjects, right? And again, minimum target you should do algorithms like complexity finding, do all the basic questions at least. And then sorting and searching, very important, because you see one connection always with the sorting in every GATE exam, and another connection with the trees concept like spanning tree or heap tree. Right, depends on the their paper setting. Greedy, divide and conquer, basic questions like you study what you do in actual classes. And dynamic programming basics like what is the reconciliation, how to solve the given example, right? And what is the time complexity, basic things you study from there. And graph algorithms, definitely, for, as I said, graph is must for everyone. You cannot ignore the graph from discrete mathematics, from data structures, from algorithms. Any concept that you study in graphs will always give you advantage of 2 to 3 marks at least in GATE exam. Okay. You should target getting 6 marks in algorithms. So practice coding could be advantage, like C data algorithms, always good if you have the coding skills. It also gives you advantage of placements or understanding more about the concepts.
Now, CD and TOC is, one of the easy subjects when you know the theoretical portion. Example, the CD, the syntax analysis, if you make it good, and whole subject will become easy. And code optimization is newly added topic, and you will not find a lot of questions, but if you go with a little bit of code optimization techniques and data flow analysis techniques, it's very easy, very small portion. You can complete even 5 days the whole subject if you sit daily, 5 to 8 hours. That is the advantage of compiler design. And TOC, learning may take time, but once you learn, it's easy to answer. This is only the subject I feel you don't need pen and paper while solving the questions. तो बहुत easy होता है गेट एग्जाम के लिए, बट पढ़ने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है. इसलिए दिस टॉपिक्स, रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड रेगुलर लैंग्वेजेस रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होता है, DFA कंस्ट्रक्शन, NFA कंस्ट्रक्शन एंड एनी पंपिंग लेमा कॉन्सेप्ट, all of them you complete, so that you will get at least 4 to 5 marks from there only. Context free grammars and CFLs 2 to 3 marks will be added advantage. So if you study these 4 concepts and you get a lot of good marks, like 8 marks from only these concepts, and I'll recommend to study at least this. Remaining is your choice. If you want more, you study more. And here advantage is practice, always practice identifying languages or identifying the language generated by grammar or identifying the language represented by automata. Such questions will be asked in the GATE exam. And practice PYQs always. That is advantage to understand the pattern. Okay, so discrete mathematics. What could be the important? I don't think anything is less important here, because graph theory is always important to know types of graphs and the connectivity in the graphs, and graph coloring, graph isomorphism, planar graphs, all these kind of questions here and there be connected. And mathematical logic, definitely 2 to 4 marks. Predicate logic and proposition logic, both are very important. Permutations and combinations, because sometimes in aptitude also they may ask the questions from permutations and combination, including probability from engineering mathematics. So set theory, like especially sets, relations, functions, very important. And other 2 topics, group theory and lattice theory, is your option, because they may ask, they may not ask, but definitely you must study if you want to perform well in exam. Okay, target at least 5 marks, because sometimes 5-6 marks will be asked. 5 to 8 marks guaranteed, so 5 marks at least you should get from this discrete mathematics. Okay. And that's, in mathematics always what you do, you need to practice more in this, right? Focus on numericals, focus on approaches, focus on the formulas. And operating system, there are a lot of easy topics and questions are easy, like CP scheduling. Always there is a question from there. 2 to 3 marks weightage will be there, and even process and thread sometimes they may be asking. But these 4 topics are really important for you, like memory management. You should study like paging and segmentation, semaphores. And always focus on the concepts. Those formulas will help you sometimes, but not all the times. Okay. And numericals, most of the numerical questions will be asked from operating system, so focus on that. Theoretical questions also there, but very few from process and threads, from semaphores, and right. So you should try to get 6 to 7 minimum marks from operating system to ensure that you will be landing nearby 75 marks. Like DBMS. In DBMS, really, challenging, like many people think like it is a vast, but actually it is not vast. DBMS, if you attend the Vijay sir lectures or any, if you even study textbooks, you will see a lot of correlation between the actual classes from GFG and then textbooks. Like SQL queries, really, one question, or query set list, 1 or 2 questions will be there. Normalization, minimum 1 question. Transactions, and sometimes indexing also, you will be seeing the questions from there, like B trees also. So SQL, keep it, we will get 2 marks ensure from there. And also you practice a lot of theory from this normalization, ER diagrams, so you will be understanding the connections. Try to target, because easy subjects you should score well. So one of the easy subject in the GATE is this one, because they'll ask you to find the key, they'll ask you to find the functional dependencies, so it's easy to score them, right? Computer networks, and many people are afraid of this subject because it's a vast, and instead of completing the subject, you can complete 2 or 3 subjects by this time. It's true, but if you are studying CN at the end, please ignore it,
only study important topics like you may study IP addressing, or you may study, routing algorithms. You may study sometimes the application layer protocols, and you may study even basic questions from OSI models, right? So depends on your time. Choose the topics which were there in the last 5 to 10 years and practice them. But don't go for entire subject when you are having the lengthy subjects at the end, because now onwards, if you have, let's say, 40 days in front of you, you cannot complete even one subject if you prepare fully. Rather, choose 2 or 3 high weightage topics from each subject, and if you have 3 subjects left, you can easily complete. So I recommend to go for the selected high weightage topics. I have already mentioned the high weightage topics, and also analyze yourself once, like how many questions were asked from each topic, and choose, if you see more questions in the last few years, choose the topic and prepare for the next. Now, so maths and aptitude, many people don't do preparation from the beginning, but those who have done, they have done fantastic job. But agar aap prepare nahi kiya, now it's the time to start practicing daily, half an hour, 1 hour, 2 hours, depends on your time. Like linear algebra and probability, you do practice from maths. Calculus little bit is fine. Remaining from aptitude, do as much as you can, like data interpretation questions, logical related, verbal related, non-verbal. You can choose many topics as per your notes or your lectures, and definitely you do it, because this time the more practice should be done from maths and aptitude, because technically you might have been completed well, but maths and aptitude, if you are weak at, and you might be differentiated from others, like 5 to 10 marks you are away from them. So by doing little bit of preparation, you can secure out of 15, 10 plus marks easily you can secure. Okay, keep that in mind. If you get really 10 plus marks from mathematics, aptitude only, you will be always having advantage. तो एक्चुअल गेट एग्जाम के लिए बहुत फायदा होगा. तो अगर अब तक कोई भी aptitude prepare नहीं किया, just give little bit of push for aptitude preparation and little bit of maths practice, right? So 10 plus if you get in aptitude, maths easily you can get 2 to 4 marks, correct? Now, तो स्मार्ट स्टडी जो टेक्निक है, सबसे पहले आपको ये होना चाहिए, यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, राइट? इट माइट बी योर माइंड माइट बी नॉट अलोइंग इट, बट ऑलवेज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू गो विद स्ट्रेटजी, बिकॉज वी नो देयर इज लॉट इन फ्रंट ऑफ यू. आपको यही होता है हमेशा, यार जल्दी खत्म कर लेते हैं. जल्दी खत्म करने के समय में कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठते नहीं. तो बहुत लोग ऐसे हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करने का समय में कॉन्सेप्ट को दिमाग में नहीं रखते. तो प्रैक्टिस में फोकस करते, बट प्रैक्टिस में क्या होता है, हर प्रॉब्लम में अप्रोच अलग होता है. तो ये प्रॉब्लम अभी जो प्रैक्टिस कर रहा होगा वो आएगा नहीं आएगा आपको नहीं पता. सो एट द एंड जो कॉन्सेप्ट किसी को भी अच्छा से समझ में आया, और वही लोग गेट एग्जाम में बहुत अच्छा से अप्लाई करेंगे. ये मैटर नहीं है आप ये टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहा है, आप वो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहा है, आप इस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है, आप वो इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है, आप इंडिया में हो वर्ल्ड में हो, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा. जिसको कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आता वही रैंक लाएगा, राइट? तो बट ये मत देखना तो रैंक 1 कहां से आया, टॉप 10 रैंक्स कहां से आया, ये तो सिर्फ मार्केटिंग के लिए होता है. बट ये नहीं चाहिए आपको ये चाहिए कॉन्सेप्ट फर्स्ट. दिमाग में ये रखना, मेरे पास अगर कॉन्सेप्ट है मैं अप्लाई कर सकता हूं. और सेकंड, आपको हर टॉपिक, मतलब जो भी आपको लगता है हाई वेटेज टॉपिक्स भी हो, हर टॉपिक भी हो, तो पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है. सारे करना जरूरत नहीं, कम से कम आप कुछ परसेंटेज ऑफ पीवाईक्यूज करना, ताकि आपको पैटर्न इजीली होता है. जैसे 10 क्वेश्चन सेम टाइप की है तो 2 क्वेश्चंस कर लो, उससे काफी है आपके लिए. बट सिलेक्टेड क्वेश्चंस को भी कर लो, राइट, टू सेव योर टाइम. एंड शॉर्ट नोट्स फॉर्मूलाज अब जरूरत होता है तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं बनाना सेकेंडरी. अगर नहीं बनाना, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूलाज की नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम से इधर उधर, तो यू कैन डाउनलोड देम एंड यू कैन डू इट. अगर आपके पास ऑलरेडी है, आप खुद बनाया होगा, देन प्रेफर इट. ओके. और वीकली रिवीजन एक्चुअली ये भी इंपॉर्टेंट है, डेली रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है. अगर डेली रिवीजन किया, जो आज किया उनकी रिवीजन आज ही कंप्लीट कर लो. जो प्रिपरेशन, जो प्रैक्टिस जो आज किया है उनकी रिवीजन भी करना होगा, ताकि आपको यार याद है नहीं, ये शाम तक आपको क्लियर हो जाता. तो वीकली रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कि वीकली रिवीजन ये होता है, आप मान लो डेली सब्जेक्ट वाइज कर रहा होगा. वीकली क्यों जरूरत है? क्यों कभी कभी ऐसा होता है डेली आप कंप्लीट नहीं कर पाते, वीकली आप टारगेट कर सकते हैं. जैसे माना तो एप्टीट्यूड को आपको रिवीजन करना है तो नहीं हो पाया, तो वीकली रिवीजन में आप कवर कर सकते हैं.
तो रिवीजन भी प्लान करना, वीकली एक रिवीजन होना चाहिए। जो डेली किया है वीक में वो सारे रिवीजन करना है, जो आप कम किया है उसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना। और एक सेपरेट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जो जो मिस्टेक्स आप आइडेंटिफाई करते हो टेस्ट में स्पेशली और प्रैक्टिस में, तो उनको नोटबुक लगाना। जो आइडेंटिफाई किया उस नोटबुक में लिख देना, ये मेरा मिस्टेक्स है, वो टॉपिक का नाम लिख दो, क्वेश्चन टाइप लिख दो। और जो जो आप लिखते जाओ, मान लो 100 मिस्टेक्स किया, 100 मिस्टेक्स आइडेंटिफाई किया, उसमें से कम 5 टाइप तो एग्जाम में आने के लिए चांस है ना। तो आप बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं, सब नोट करते रहो और आप फ्री टाइम में उनको रिजॉल्व कर ले और पूरा आप प्रैक्टिस करके जाना, ताकि ये आपके लिए बहुत फायदा होंगे। तो जो जो मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर रहा है उसको इग्नोर मत करना। बहुत लोग बोलते हैं सर मैं बहुत सारे मिस्टेक्स कर रहा हूँ टीओसी में, और मिस्टेक जब कर रहा है तो प्रैक्टिस तो करना चाहिए, राइट। मैं ये भी सुना है सर मैं मैथ्स वीक हूं। अब वीक नहीं बोलना, एक्चुअली प्रॉब्लम उनका है मैथ्स अभी तक चालू नहीं किया। जब चालू नहीं किया तो वीक हो तो होंगे ना। तो ये आपको अवॉइड करना है लास्ट मिनट में। अब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बात करना होगा। अगर आप नहीं किया उसको वीक नहीं बोल सकते। बिल्कुल आप नहीं पढ़े, जब पढ़ लिया प्रैक्टिस किया तब वीक हो नहीं हो समझ में आता है। तो जो जो टेस्ट सीरीज में आप नहीं कर पा रहा है बट उसका प्रैक्टिस भी हुआ, रिवीजन भी हुआ, कंप्लीट भी हुआ, तब वो वीक होता है, राइट। तो आप ये याद रखना, जो बिल्कुल नहीं किया, आप नहीं कर पा रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। करना नहीं करना आप डिसाइड करो, बिकॉज हाई वेटेज टॉपिक है तो करना पड़ेगा, तो एग्जाम के लिए फायदा होंगे। अगर हाई वेटेज टॉपिक नहीं है तो यू कीप इट फॉर द एंड, इफ टाइम देयर लेफ्ट देन यू डू इट, अदरवाइज इग्नोर इट, ठीक है। वैसे भी आर्क आएगा नहीं आएगा वो पता नहीं है। तो पीवाईक्यू से क्या होता है, वो गेट पैटर्न समझ में आता है। जब गेट पैटर्न समझ में आता है कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्यों? आप गेट लेवल की तैयार कर रहे हैं। देखो दुनिया में यार बहुत सारे टाइप की टेक्निकल एग्जाम्स हैं, राइट। हर टेक्निकल एग्जाम सेम स्टैंडर्ड नहीं होता। जैसे इसरो देखा है, बार्क देखा होगा और गेट की देखा होगा, और बाकी जो कोल इंडिया एग्जाम्स भी होता है, ये अलग अलग एग्जाम्स, एनआईसी एग्जाम भी होता है, ये अलग अलग एग्जाम्स अलग अलग पैटर्न की होता है और सेम स्टैंडर्ड भी नहीं हो सकता है। तो बट गेट एग्जाम ऐसे है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जैसे आप CMHNA मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट जैसे क्वेश्चन देखा होगा TIFR, तो उतना टफ लेवल भी नहीं होता। तो गेट ऐसे एग्जाम है जिसकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो कम से कम 50 to 75 मार्क्स बीच में करके आएंगे डेफिनेटली। तो आपको ये पहुंचना है, 75 तक पहुंचने के लिए कोशिश करना है। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपकी कवरेज के ऊपर, आपकी कॉन्फिडेंस के ऊपर वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो नाउ द मॉक्स एंड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बेसिक्स कंप्लीट हो गया, प्रिपरेशन एक बार हुआ है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और हमेशा याद रखना कोई भी टेस्ट की अटेम्प्ट कर रहा होगा, प्लीज डोंट फोकस ऑन एवरी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना, एवरी क्वेश्चन को यार गेस करना, एवरी क्वेश्चन को मार्क्स लाना बंद करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लो। अगर रियली आपकी कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस है यार मैं कर सकता हूं, तब करो। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है यार मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, देन मार्क और इग्नोर इट। दो ही कॉन्सेप्ट्स है, आइदर मार्क इट और इग्नोर इट। मार्क किया मतलब दोबारा आओगे, इग्नोर किया तो बिल्कुल टच नहीं करोगे उसको, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो गेस करना और अज्यूम करना और प्रेडिक्ट करना, ये थोड़ा अवॉइड करना होगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस में एक्चुअल मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्योंकि टेस्ट सीरीज में अगर टॉप 1 आया, देयर इज नो गारंटी यू विल गेट द टॉप इन एक्चुअल गेट एग्जाम। तो बट एवरी टेस्ट में आपकी गलतियां आइडेंटिफाई किया, और एवरी टेस्ट में आपकी जो हार्डवर्क है, थोड़ा मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट किया, देन देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट अ फर्स्ट रैंक इन एक्चुअल गेट एग्जाम। तो डेली थोड़ा मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो, करेक्ट करो। तो इससे क्या होता, जब गेट एग्जाम आया तो आपकी मिस्टेक जो है बहुत कम हो गए, बिल्कुल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और ये रिपीट करना हमेशा। तो एनालाइज करने के बाद आपकी वीक एरियाज को फिक्स करना, उससे पहले नोटबुक में मेंटेन करके और फिक्स करके। कभी क्या होता है यार, आप नहीं लिखे तो दिमाग से वो चले जाता है, तो भूल जाने के लिए चांस है। तो अगर नोटबुक में लिखा है तो आज नहीं तो कल करोगे, क्यों? आपकी वीकनेस आइडेंटिफाई किया और लिखा भी है, आप प्रूफ है वो सामने। और टेस्ट जो है अच्छा से एनालाइज करो और इंप्रूव करने के लिए कोशिश करना, और ये रिपीट करते रहो। बट कितना टेस्ट करना है समय डिसाइड करेगा, राइट। कितने टेस्ट सीरीज का अटेम्प्ट करना, तो वो गाइडेंस लेना पड़ेगा। नेवर, मैं बहुत सारे लोगों को बता रहा हूं और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, प्लीज डोंट अटेम्प्ट द टेस्ट फ्रॉम एवरीवेयर, बिकॉज इट्स नॉट फॉर यू। स्पेशली
वहां पर प्रूव नहीं कर सकते तो नहीं कर पाओगे, राइट। तो सबसे पहले गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी टेस्ट अटेम्प्ट करना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज सबके लिए नहीं है, राइट। हर टेस्ट सीरीज में आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, बट जो मैं कहा था 2 to 3 टेस्ट सीरीज काफी है, जो एक्चुअली गेट स्टैंडर्ड होता है। और गेट से ज्यादा स्टैंडर्ड आप 2 साल से गेट प्रिपेयर कर रहे हैं तो कहीं पर भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, टॉप करोगे। बट अभी अभी इस साल लास्ट ईयर चालू किया और आप रैंडमली कोई टेस्ट सीरीज में गए, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो आपको गाइडेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको गाइडेंस की बात आता है तो हम टेलीग्राम ग्रुप में सारे फैकल्टी हम अलग अलग दिन में अलॉटेड है, तो यू कैन ज्वाइन अस एंड यू कैन आस्क द डाउट्स, ओके। और तो मास्टर द बेसिक्स, याद रखना मास्टर द बेसिक्स, ट्रस्ट द होल प्रोसेस। जो आप पढ़ रहा है तो आपको जो समझ में आया तो उस प्रोसेस को ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लेट्स जर्नी बिगिन्स एंड कंटिन्यू दैट योर प्रिपरेशन विल स्पीक योर गेट 2026। जो प्रेडिक्शन है कम होना चाहिए, बट आपकी जो एक्चुअल एफर्ट है वो आपको कंटिन्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको जितने भी डाउट होता है डेफिनेटली आई एम देयर एंड कलीग्स फैकल्टीज आर देयर इन GFG टू हेल्प यू। और आपको कभी भी कोई भी दिक्कत होता है, देखो मेरा नंबर बहुत लोगों को बहुत वीडियोस में दिया है, तो सिर्फ आपको मैसेज करना है, मेरा फ्री टाइम में मैं आपको कॉल कर सकता हूं और रिप्लाई भी करता हूं। बट आपको रिमाइंड करना, 2-3 बार रिमाइंड करना, क्योंकि काफ़ी कभी कभी बिजी होता है, लास्ट मिनट में बहुत सारे वर्क्स होता है, कभी कभी हेल्थ भी सही नहीं होता, कभी कभी ओवर बर्डन होते, तो आपके लिए टर्न जो है तो होगा, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। और डाउट्स लेने से पहले एक और भी बताता हूँ यार, गेट 2027 के लिए कोई भी प्रिपरेशन चालू किया, इफ यू हैव स्टार्टेड योर गेट प्रिपरेशन फॉर 2027, तो वी हैव द कूपन कोड 𝐂𝐸𝐧𝐤𝐬। ये 35% ऑफ चल रहा है अभी। तो फॉर लाइव क्लासेस फॉर प्लेसमेंट्स 8124 आफ्टर डिस्काउंट, और वीकेंड बैच और वीकडेज बैच दोनों है। और वीकेंड बैच के लिए 11,699, यहाँ पर लाइव भी है और रिकॉर्डिंग इसलिए प्रोवाइड किया, you may get your own phase, like you can start your own way to prepare, because live classes आपके लिए कभी कभी suitable नहीं हो सकता, तो इसलिए हम रिकॉर्डिंग भी फैसिलिटी भी दिया है, तो you can get advantage of both। और गेट 2027 के लिए लाइव रिकॉर्डिंग एंड प्लेसमेंट्स, तो ये भी सेम प्राइस है 11,699। तो ये दोनों टाइप की ऑप्शन है आपके पास, वीकेंड वीकडेज, और उसमें ओनली लाइव एंड प्लेसमेंट्स और अलॉन्ग विद रिकॉर्डिंग ऑल्सो अवेलेबल। और दूसरा भी है 2027 DA बैच के लिए भी सिमिलर है और ऑलमोस्ट, और सेम कोड अप्लीकेबल है उधर भी। और 2028 अगर आप 2 साल के लिए प्रिपेयर करना चाहते then you also have an option like for 14,299 after discount, like you can use the code 𝐻𝐸𝐧35, so after giving 35% discount in the batches you'll get the prices which are shown here। और उसके बाद जो है तो 2028 DA बैचेस भी सिमिलर है। और ये जो गेट गुरुकुल बैच है डेफिनेटली समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर बैचेस, आपके लिए गाइडेंस होगा, जैसे आप यूट्यूब में आके किसी से पूछना जरूरत नहीं होगा, क्यों, हम हमेशा आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं, एवरी वीक में आपकी एनालिसिस होता, और आपके साथ आपकी फेवरेट फैकल्टी के साथ कभी भी आप बात कर सकते हो, हम शेड्यूल करके गूगल मीट से, हम जूम से आपसे कनेक्ट करके हमेशा आपके लिए टाइम देते हैं। तो इसलिए गेट गुरुकुल बैच बिल्कुल अलग है। और 2027 के लिए 29,999 है, और 2028 के लिए भी है। तो यहाँ पर एक और एडवांटेज है, आपकी सेमेस्टर एग्जाम आया, प्लेसमेंट्स भी है, तो आपको गाइडेंस ले सकते हैं, और आपको कोई भी दिक्कत होता है और उसके लिए काफ़ी हेल्प होगा, इसमें सर्विसेज ज़्यादा है, तो इसलिए आपको अगर जानना है तो यू कैन कनेक्ट विद अस, विल डेफिनेटली डिस्कस विद यू, राइट। और अब वाइंड अप करने से पहले I'll take up your doubts for a few minutes, then I'll wind up the session। चलिए एक एक क्वेश्चन को ले लेता हूँ, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इन रिवर्स ऑर्डर, all subjects done but still not getting the expected marks, right? There are so many people having the same question। प्रॉब्लम ये है, when you have done all doesn't mean that you will get a good marks। आपको यही है हाई वेटेज टॉपिक्स को चूज करके बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना, ताकि वही से बहुत सारे क्वेश्चंस आता है, then you will get good marks। So choose the topics and practice more, and if you are not able to get good marks, you need to sit down and analyze it, every question that you have done mistake, analyze it। if you have done the mistake, it doesn't mean that you are not good at, could be possible sometimes calculation mistakes, could be possible that you have done right
but while answering you might be done wrong. So identify how many actual mistakes you are able to do it. At calculation mistakes you can overcome by the practice. Pavan, you're not able to access the test series in Agni Parish? Yes. Please drop a message to Chandan sir or me. Will help you. Okay. Or you can post in our Telegram groups. Definitely Mohit will connect with you. Yes. जो 2 papers के लिए prepare कर रहा है, if you are getting the problem now, then please stick to any one of the paper, because you're not able to carry the 2 that you should have decided in the beginning, right? By this time you should not have a doubt how to do both, because now you have done both well, then practice more. Okay? Don't waste the time on both the papers now when you are not able to do one of them. अगर आप दोनों में सही नहीं कर पा रहे, एक तो कोशिश कर लो ना. और क्या क्वेश्चन है? Sir, I've completed everything, just network is remaining. Should I cover it or should I revise other topics and just cover important topics of CN? Yes, it go with the important topics. जैसे IP addressing है और routing algorithms है, application TCP. Possibly if you try, you can also get well marks in that too. So choose 2 or 3 topics from the whole chapter. First complete it. उसके बाद भी समय है, then do it. फर्स्ट चैप्टर थोड़ा कोशिश कर लेना, क्यों बेसिक्स रहता है उसके अंदर. तो डू इट दैट फर्स्ट चैप्टर, रिमेनिंग चूज बेस्ड ऑन द वेटेज. मॉक में 45-50 मार्क्स आ रहा है, बहुत डिमोटिवेट हो रहा है. बीइंग ऑफिसर, डेफिनेटली getting 45-50 is the beginning stage, so you need to improve, right? Sometimes it may happen like in some of the tests you got 70 marks, but in other tests you may get 45 marks. See, the 65 questions from any institute, from any test series will not decide your rank. It is only for that test, right? But other tests you might be getting more marks, but every test you are getting 45 to 50, then you should analyze it, right? So sometimes questions also matters. Those people who are setting the test series, they are not going to be the GATE IITians, right? They may be teachers like me or others, or sometimes students set or test series. So you don't know exactly why they are making the test series, and do you really look at their analysis? No, just look at your mistakes, not the marks. My recommendation for anybody who is attempting test series, first 5 to 10 tests, focus on your mistakes, okay, and try to improve. Yes, Anugya, if you are not completed your subjects, please now don't focus on completing the subjects. If you have done lot of subjects, easy to complete 1 or 2. But if you are left with more than 2 subjects, now this is not the time to complete. So focus on remaining the subjects which you have completed, revision and practice, and give at least topic test and subject test. And also I request everyone, those who have not completed more than 80% or 70% syllabus, please don't attempt mock test, because you will not get the marks, no doubt, right? Unnecessarily you will get demotivated. Those who have completed more than 80% of the syllabus, then you may do analyze properly, right? Most of the subjects you have not done, how can you give full length test and looking for 100 marks is not correct, no? All right. So those who have not done even 2 subjects, I don't recommend. This is not for you, especially this session. You can connect with us personally, will help you. Yes, really. Sometime there could be a lot of big questions you struck. Do you agree with me? You may be spending more than 15 minutes, sometimes 20 minutes, sometimes 30 minutes. Because of that, the whole test will be impacted. You have only 3 hours. One question, if you are giving half an hour time, how can you give remaining 64 questions in 2.5 hours time, right? So understand, if you have the mindset attending or attempting some questions with a more time, then I recommend not to do that. If you have, that means it's good,
you have done, you have identified. Now it is the time to correct that. And how do you correct it? The one way is, see, the whole 65 questions, when you look at least 20 questions you can do within 2 minutes, at least I'm talking about. And some questions will take 3 to 4 minutes. Oddly 3 or 4 questions may take 10 minutes. But in first scan, better not to attempt any question which goes beyond 5 minutes or 6 minutes. Don't attempt it. If you are able to do it, mark it. If you are not able to do it, don't mark it. So hardly will mark 5 to 10 questions out of 65, and then you do it later once you complete within 2 hours. Mostly I have seen a lot of people 2 to 2.5 hours time, they'll complete the first scan. Remaining half an hour to 1 hour if you left, and those questions which you have marked, then attempt it. Okay, so that's the best strategy as per. And second is, like, always do 2 marks first, because 2 marks I've seen, like some people, if you know 1 mark 2 marks, if you're not able to identify, go sequentially, no problem. But if it is given like 1 mark and one side, 2 marks other side, then better to go for 2 marks first. The reason is, if you go for 1 mark first, you will spend a lot of time on 1 mark, you will not get much time on 2 marks. So when you don't get much time on 2 marks, there is high probability you will leave some of the questions. Okay. Yeah, Raj, true. PYQ series, we are planning it soon. We'll announce it whenever we decide. Any other doubts that you have today? Good. Any major doubts? Initially I missed some of the doubts. Let me look at it. Network and EM पूरा complete नहीं हुआ. How much should I target? Okay, that's what, right? Engineering mathematics, do probability and linear algebra definitely, because both topics are important. Networks, you can choose a few important topics. Yes, सिर्फ aptitude 15 marks है, तो 15% weightage है. It's good, easy sleep. You got a good marks, so that means you will do better in actual test also, actual exam also. Any other doubts? So yesterday, another Saturday mostly, and I may be coming any day, and soon I might be coming every day. So you can request on Telegram group. If you want live discussion, you can request on the group. Every day I'll come to the live. It's not the big difficult. Okay. Remember that my Telegram group, like Deva Sir Gate CSDA, and you can connect with me on Telegram and you can ask the doubts. सीढ़ी तो प्लान नहीं किया, तबीयत ठीक नहीं था, तो डेफिनेटली इफ द टाइम परमिट्स आई विल डू इट, अदर विल गो फॉर मैराथन एंड PYQs. यस, क्वेश्चन को रीड करने में बहुत टाइम इसलिए लगता है कि वो क्वेश्चन पैटर्न नया है. जब क्वेश्चन पैटर्न नया है, then definitely it will take 1 to 2 minutes only for reading. Solving will not take much time. It will take 1 or 2 minutes hardly. तो यही है, जो क्वेश्चन को समझना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ऑलरेडी पता है क्या, पता है तो टाइम नहीं लगता. तो क्वेश्चन को टाइम लगता है पढ़ने में, इसलिए मैं कहा था कोई भी 5 सेकंड 10 सेकंड में आंसर किया है, मतलब क्वेश्चन उनको ऑलरेडी पता है, आंसर उनको ऑलरेडी पता है, तो इसलिए उनसे पॉसिबल हो गया. तो इसलिए वो जो टेस्ट सीरीज जो अटेम्प्ट कर रहा है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत लोग को ऑलरेडी पता है, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी नया नहीं बनाते हैं. लास्ट मॉक टेस्ट, लास्ट ईयर का टेस्ट से इधर उधर से कॉपी पेस्ट किया होगा, तो आपको क्वेश्चंस को आंसर करने में टाइम नहीं लगता, तो उनसे आप कंपेयर नहीं कर पाओगे. तो यू हैव टू कंपेयर विथ योर नॉलेज, नॉट विथ समबडी एल्स. अगर आपको कंपेयर करना है, आपकी मार्क्स उनकी मार्क्स से नहीं, आपकी मार्क्स आपकी परफॉर्मेंस से कंपेयर करो. करेक्ट. तो आपको और कितना इंप्रूव करना है वो आपसे आप खुद कंपेयर करना. प्लीज डोंट कंपेयर यू विथ एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज यू एंड अदर may not be sitting with the same environment. Okay. Great, Kiran. Thank you for connecting.
you did not complete discrete mathematics, I'll at least recommend to go with mathematical logic, proportion logic, very easy to complete, right? And or what not, this proportion logic, conjunction, disjunction, negation, this kind of things very easy to understand, implication by implication, and inference logic. It could be possible to learn even within hours also. So choose the topics which you are able to understand, like graph theory. Okay. Few concepts you can easily learn. So whichever you can learn, spend some time and try to learn the basics and go to the exam. So which we'll discuss, DRDO scientist post we'll discuss later. This video is not for the DRDO, okay? Yeah, Kiran. I'll check. If I get a time in the next week, I'll start the compiler definitely. Let's see. Connect with me on Telegram if you are if you are requesting, and many people are needed. Definitely, I'll start. Okay. 10 around silly mistakes. Please note down what kind of mistakes you are doing in test series. Always maintain the mistakes notebook. Like every mistake, you note down like what kind of mistake. Sometimes you have done calculations correctly, but answering the right option you have not chosen properly. Otherwise, sometimes you are not doing additions or multiplications or subtraction. What kind of calculations you are doing the mistakes? Because it's obvious, right? Many does mistakes, but you need to correct it by practicing it. When definitely न्यू टॉपिक से आ रहा है, इफ यू हैव नॉट स्टडीड इट, तो दो चीज़ है, आइदर बिल्कुल इग्नोर करना कि वो जरूरत नहीं है, सेकंड अगर आपके पास समय है, आपको लग रहा है यार कर लेते, आपको बाकी कॉन्सेप्ट में बिल्कुल स्ट्रांग हो, तो डेफिनेटली यू कैन गिव योर टाइम, यू कैन लर्न फॉर इट. इट्स ओके. इट डजंट मैटर वेदर इट्स डिफिकल्ट और इजी. पवन, अगर डिफिकल्ट भी हो, सबके लिए डिफिकल्ट है, राइट? तो आपको सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करके जाना है. क्यों? वो जरूरत नहीं है वो डिफिकल्ट है, इजी है. जो अटेम्प्ट किया है उससे वो लोग चूज करेंगे ना. तो आपको 100% मार्क्स आना जरूरत नहीं है बहुत सारे एग्जाम्स में. तो बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए. तो जो टॉपर्स है उसमें इजी होता है सिलेक्शन होने में, राइट? Any other doubts that you have today? Did I miss? Yeah. Video on bark, we will do it later on. Definitely needed. Repeated question. Thank you so much for joining today, and see you in another session too. Yeah, अर्शित का क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग के बाद अगर 20 years का PYQ 2 बार कर लिया, there is no guarantee will get 1000 rank. There is a guarantee if you perform well in actual gate exam, right? हम इसलिए बोलते हैं PYQs को करो ताकि आपको पैटर्न समझना चाहिए. PYQs करने के लिए क्या है, 10 बार भी कर सकते हैं, but it doesn't matter even you do 2 times or 1000 times, but what you learn from that PYQs is very important. अगर आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया, आंसर नहीं चाहिए हमको, क्वेश्चन को समझना और हर ऑप्शन को समझना, एनालाइज करना और आपकी जो अप्रोच है उनको अप्लाई करना, और वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है एक्चुअल क्वेश्चन से, ये मैटर करता है. मैं यही तो कहता हूं यार, आप गेट को 10 बार भी करो, 2 बार भी करो, 1 बार भी करो, प्रिपरेशन सब सेम है. डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन स्टाइल, राइट? कभी कभी 1 बार कॉफी होता है, कभी कभी 10 बार के बाद कॉफी होता है.
तो ये आपकी प्रिपरेशन डिसाइड करेगा, इनको एक बार करना है, 2 बार करना है, 10 बार करना है। तो बहुत लोग को PYQs करना जरूरत नहीं पड़ता, क्यों, हम क्लास में PYQs ऑलरेडी एनालाइज करते हैं बहुत सारे, वो काफी होता है उन लोग के लिए। बट कभी कभी ऐसे है, बहुत सारे PYQs में सीखने के लिए बहुत लोग अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें और कुछ अप्रोचेस मिलता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, आपकी समय कितना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, राइट। तो अगर आप 2 बार PYQs किया, हर कॉन्सेप्ट जो क्लास में पढ़ाया बहुत अच्छा समझ में आया, और could be coffee to get even top 100, forget about top 1000. Okay, thank you so much for attending this session, और नेक्स्ट सेशन में हम और भी बहुत डिस्कस करेंगे, और बाकी फैकल्टीज भी आएंगे आपसे डिस्कस करने के लिए। बट अगर आप हमसे कनेक्ट करना है तो डेफिनेटली ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप्स, एंड विल बी हेल्पिंग यू एवरी डे. All your troubles is ours, and we'll give you right guidance to prepare well. And please connect with us on Telegram groups to discuss daily, any kind of guidance that you need. We are going to be there in Telegram group to help you. Okay. Till that, thank you so much. Bye bye.